understand अस करो अ रियल एक्सपीरियंस गस इमेज गेन गसी प्रैक्टिकली करो अस अंडरस्टैंड करने कोशिश कि chemical change कित कन चेवान ये ज सबस्टेंस युस अस ड्यूरिंग द थ्योरी पार्ट अस क्लासेस मज एक्सप्लेन कोर कि ये ज चीज पान वी रलन अगर तुम केमिकल बाइंडिंग करन न के अगर तुम केमिकली अक अकस सहित अटैच गसन न के नो सबस्टेंस गसन तेल फॉर्म के सो केमिकल चेंज वुचो इस गसान कित कन फिजिकल चेंज कर अस पतमस प्रैक्टिकल्स मज अंडरस्टैंड तम खतर फिजिकल केमिकल चेंज समझन खतर छ मे अक रिडॉक्स रिएक्शन अस करनावन रिडॉक्स रिएक्शन कथ रिएक्शंस वनान छ कि ये ज सबस्टेंस पान वे रलन एट द सेम टाइम अख सबस्टेंस गस ऑक्सीडाइज ब्याक सबस्टेंस गस रिड्यूस क्या गस अख गस ऑक्सीडाइज ब्याक गस रिड्यूस ये simultaneously means at the same time during the process of a reaction when one substance gets oxidized and another one gets reduced, so the entire reaction is given a name. It's called a redox reaction. So in this redox reaction we are going to understand it today through this practical कि you see redox reaction छ अथ redox reaction मज बन अक नो सबस्टेंस अक नो केमिकल सबस्टेंस अक कंपाउंड गस बन नो तो तथ केमिकल सबस्टेंसेस या सु कंपाउंड युस नो फॉर्म गस युस ये प्रोसेस सरी गस तथ चेंज वनो यम पुरान चीज अस रलैमत आसन तुम रोजन तुम के सपोज अस रलावन सबस्टेंस ए प्लस करो सबस्टेंस बी पत करो कम ये पत नो सबस्टेंस बन सो रोज न ए to b सो क्या बन सो when a no substance and new substance will be formed that will be completely c that will be completely different in nature from the previous two substances which were previously mixed and a new substance will be formed. So एम खतर क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन करने खतर से मैं आप छोटा सा सेटअप तैयार किया है. इस सेटअप में आप देख रहे हैं मैंने शायद स्टैंड अप होल्डर अप बेशी क्लैंप अप बेने में टेस्ट ट्यूब अप इस सॉफ्ट टेस्ट ट्यूब तुलन त्राउन बे की क्लैंप स्मज करन बे बंद मैंने शो ड्रॉपर अप बेश में सल्फ्यूरिक एसिड एथनस बेश में ब्या केमिकल इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 is its chemical formula and this is sulfuric acid. Its chemical formula is H2SO4, very strong acid. So you always need to take care of it while you are dealing with these things in the laboratory. So don't try to touch it without any protection. Yes, exactly. So be safe. The safety is the very important when you are in the lab, and you think of that. Always keep away from this thing. This is very dangerous and very corrosive in nature. And we have one more substance. This is potassium permanganate. Its chemical formula is KMnO4. What is its chemical formula? KMnO4. This is hydrogen peroxide H2O2. Very good. This is sulfuric acid H2SO4, and this is the dropper. Okay? Yes. Correct? क्या बोला? ये क्या chemical formula? H2O2. बोतलों ये substance, and I will put a few of the drops in this test tube. So I am putting a few of the drops of H2O2 in this test tube. So this is my substance first. Okay? So I am gonna show you how a redox reaction is carried out and what happens when the redox reaction occurs and how chemical change is placed. Kit kanch chemical change gasa, how new substances are formed. So this is number one. This is the substance first which we have poured into this test tube, and this is H2O2 hydrogen peroxide. Okay? So got it. Now second thing is कि बकर ये रिएक्शन युस ये रिएक्शन ये करन एसिडिक एनवायरनमेंट्स मस कत एनवायरनमेंट्स मस करन एसिडिक एनवायरनमेंट्स मस के दबा ये H2O2 रल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 स मगर एनवायरनमेंट आस एसिडिक एनवायरनमेंट करन खतर कर बया थोड़ा सा एसिड ऐड बे क्या करस त्रारास में एसिड दबा तेल गस रिलीज ऑफ नो चीज क्या गस रिलीज अख बदल के कंपाउंड यम जैसे यत केस में बना मैग्नीज क्या बना मैग्नीज आयन बनन बे क्या गस कम बे गस ऑक्सीजन गैस रिलीज नो चीज अख बनस यानी यम इस त्रण में डिफरेंट चीज दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्मड दैट विल बी ऑक्सीजन गैस सो क्या सो इज ऑक्सीजन गैस लुक मे या ड्रॉप से सल्फ्यूरिक एसिड बोतल सल्फ्यूरिक एसिड त्राव कत मज बत्रावन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से त्राव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से. So this is now hydrogen peroxide के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने डाला. इतना ही थोड़ा सा ही डालेंगे और उसके बाद इसको क्लोज करके यहाँ पे रखेंगे. अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा. अब हमारे पास जो तीसरा, let's take a few of the granules of this potassium permanganate. These are the few of the granules of the potassium permanganate. You can watch it, you can see it. These are very small black
color granules, but when they are dissolved in water, they give another color, that's purple. Even color is purple, you'll dissolve gasan. But of yum travel, you keep on watching the reaction, what will happen, and later I will explain it. So I'm just going to put a few of the drops this. Okay, you are seeing the reaction, just see. And you are watching that the bubbles are occurring and a gas is released out. Gasancha gas, Nerancha gas. So this gas which you are going to see, and this is releasing, this is actually oxygen. What is this? This is oxygen. So the gas you are seeing, this is oxygen. Oxygen is now coming out of, and the reaction is in its full bloom. The reaction, you watch the reaction, how the substances are reacting together. Kitkan substance panwi ralan. Kya kya ralan? Aach potassium permanganate ralan. Potassium permanganate ralan. Beaker ralan cha. Beiraliya ya kat saitan H2O2 sait. Hydrogen ne. Variya zyada. Magar aschan teldir oxygen gas nir variya zyada khashur. Lekin for protection and for the safety, I'm just making you sure that how things are actually happening when we are talking about the reactions, how chemical change takes place inside the reaction. So let me explain you a few of the things about this. So you KMnO4 H2 peroxide go yatmos oxidize. Kya go? Oxidize. Means H2O2 go convert katmos oxygen man. So oxygen gas bene draw never. I got from it. The way H2O2 go na convert katmos oxygen man atmos oxidation. Kya vonos? Oxidation. I got from it. Bya kya hos yatmos substance? KMnO4. KMnO4 is beak part asan go potassium K permanganate part asan MnO4 the you go reduce kya go ye reduce guys you can convert Mn2 plus yani manganese ion man kya ki ye karan ye manganese ke MnO4 mach kara Mn lose electron can you lose theek cha the ye kya sab ban ye guys manganese ion man convert to use potassium os K so as yet solutions must dissolve the rois öthi man the bayel H2O2 must use H2Os so guys convert water man so water tish kat man yet man the ach potassium ion yet man so water tish yet man bay MnO4 must use oxygen os O4 the switch dissolve kat man yet man magar reduction kya gai the oxidation kya gai oxidation gai H2O2 go convert oxygen man this is oxidation at the same time reduction kya gai MnO4 go convert manganese ion man bay ch asan KMnO4 yel ye kunti mans dissolve karon abas mans ya kun cheezes mans at pan use color is purple color ye chata ya purple color bozna no here is no color because the color has disappeared go this disappearance of this fading youth guys ne sorry ye bilkul complete disappear yel ye color go at color disappear gasnas at gab gasnas te wono is at ge reduction kya gaye reduction so tel kya go at the same time kya go ye ge reduction te ye ge oxidation te that's why this entire reaction is called as redox reaction kya shatmana so now you got a few of the basic things you are now quite able to understand what actually the redox reaction is redox reaction kus gay ye ge sur reaction yat mus dono ei cheez gasan yakja af kya guys oxidation te guys the reduction te guys bey kuchu ta yat mus kya कि chemical change kitkan chema ye z substance ralay कि आप no substance बनाओ यानी oxygen उसी नहीं रलो हुई नहीं ऐसे एक्चुअली मगर oxygen option कहाँ है कि role इमन दोनों compound में directly as chemical structures में जो oxygen मौजूद मगर ऐसे उन्हें externally अगर याद से रलिया मुझ आइस मगर no product ये नम ज़ी चीज़ ऐसे रलो आप no gas go evolve that's oxygen बे manganese ion उसी नहीं ऐसे अलग आत्मा तो manganese ion बने color उसी नहीं ऐसे fade दोनों you go disappear go color go disappear so this is the chemical change and this is how chemically things combine together and give rise to the formation of other compounds okay so this is I think all about today's practical and let us see some other thing